Ashish. Okay, so just one sentence. There is no stupid question. You can ask anything, really. So there is no stupid question. Don't be shy. Just ask whatever you want. Okay? जो मैंने पब्लिक किया कि नहीं, जल्दी आगे देखो. विक्रम सर. गाइस हेलो, गाइस चेंबूर में नहीं है. चेंबूर फिर अपन ऑटो करके आए थे. ना, उसका चेंबूर ये लोग मत करो, तुम समझाओ क्या है. उसको देना काट देंगे. हाँ विक्रम सर बोलो. हेलो हेलो चेक चेक हाँ हाँ, मैं भेज रहा आपको. हेलो guys, if you have any doubts regarding the rules and regulations or maybe in skills or performance, you can ask. Now is the time. You can clear your doubts. And don't ask us when we stand out and know what's the feedback. You can ask for how about we one second. Hello. जल्दी देखो. और लाइव दिखता है कि नहीं दिखता है वो देखो सबसे पहले. हेलो सर, सभी को एक तरफ से नमस्ते राम राम. एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, 45 दिन हो गए मुझे ऑलमोस्ट. और मैं जितना सीखने की कोशिश कर रहा हूँ उतने कंफ्यूज होती जा रहा हूँ. मुझे समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली हिप हॉप है क्या. और अभी मैं साइड को जानता भी नहीं होगा. आप जयपुर के, अब आप अगर राजस्थान को समझोगे तो जयपुर जोधपुर उदयपुर याद आएगा आपको. अगर के अलवर कोई नहीं जानता. तो मैं ऐसी सिटी से बिलोंग करता हूँ. तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सिटी में हिप हॉप कल्चर को लेके जाऊँ. वहाँ पर लोगों को नॉलेज दूँ हिप हॉप के बारे में, बताऊँ हिप हॉप होता क्या है. तो मैं अभी यहाँ पे आया फर्स्ट टाइम. मैं अच्छे से ग्राउंड में सही माने तो पहुँचा, उसके बाद बाहर हो गया. लाइव पे बैठा तो हूँ. मुझे जानना है कि अगर मुझे ऐसे टाइम में अच्छा परफॉर्म करना है तो मुझे किस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, किस चीज़ को मैं अच्छा कर सकता हूँ. और कोरियोग्राफी के लिए क्या क्या पॉइंट होते हैं जो मुझे जाननी चाहिए एक्चुअली. कोई भी आंसर कर सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप अलवर से हो. अम्बेडकर गार्डन को साइड अम्बेडकर गार्डन या महेश काफी टोटोरियल. जैसे आपके सराउंडिंग में ये जो हाँ. सो मेनी ऑफ देम दे आर रियली गुड. तो आप उधर कितना ट्रैवल कर रहे हो इस चीज़ को लेकर? एक्चुअली सर मैं दिल्ली में जाता हूँ. हाँ, मैं क्लासेस लेता हूँ. मैंने आपकी क्लास भी ली हुई है, काफ़ी सर्टिफिकेट क्लास ली है. मैं लेता रहता हूँ क्लासेस. दिल्ली में जाके लेता हूँ. तो मैं सीखता हूँ. वहाँ क्या होता है, नॉर्मली कोरियोग्राफी सिखा देते हैं मुझे. वो कोरियोग्राफी तो मैं यूट्यूब से भी कॉपी कर सकता हूँ ना आप लोगों का, लेकिन वो नॉलेज नहीं देता अच्छा वाला कि तुम इन चीज़ों को सीखो, इसकी फाउंडेशन में जाओ और तब उन चीज़ों को क्लियर करो. तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ. तो कंफ्यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम स्टाइल्स पे पहले फोकस करो. पहले जानो कि कल्चर में क्या क्या चीज़ें हैं. एक स्टाइल्स का ना एक दो दिन वर्कशॉप में नहीं होता. इट टेक्स लॉट ऑफ इयर्स यू टू अंडरस्टैंड द रूट, द फाउंडेशन, द रूट्स, द हिस्ट्री. अगर ये सब पता होता है when you get understand all these things, then you will know what is the true cultural heritage of each style, where it come from. Then only you will slowly, like it's really good to taste new food, like it's good to learn new things. But people are so quick right now with expectation. They wanted immediate success. That will not happen. You have to go to cycles. You have to go to battles. You have to go and perform. You have to gain knowledge from so many pioneers here in India and from outside also. So once you get exposed to these things, then slowly you will get into it and you can put that in your choreography and you can have a better impression when you perform in front of us. So likewise, each style has got its own cultural heritage. So you have to go, first of all, if you want to have a good choreography, just go through the rules and regulations. There are so many things. Like yesterday I happened to see so many of them were performing, but when I judge the skill, so when I see them at each style, they were just doing the same move. When I say each style, each style has got so many things that and put it so that they can represent in the international platform. ओके सो अभी अगर आपने फॉरएवर डांस शुरू में अगर आपने डांस देखोगे तो मुझे बताओगे कि मुझे किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि अगली
नेक्स्ट टाइम तो मैं आऊँ तो See, that is what I'm doing. मेरे को स्टाइल से लेके मेरे को इंटेंसिटी एग्जीक्यूशन और उसको भी कैसे करते हो how do you work on the musicality, beat techniques, the variety of dance styles. Yeah, it's okay that you did a good show, but when you want to go to the next level, work on those things. Right? So थैंक यू सेम बराबर नहीं बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। और किसी को और कुछ सवाल अभी बराबर है बराबर टेढ़ा मेढ़ा। चल ओके और किसी को कुछ सवाल पूछना है ओके जैसे गेट की माइक My question is for again, ma'am, I want to ask that is there any mark for the song, like editing and how it's going through the has song? started already. So your question is about the music. About the music. About the music. Okay, so we have in the panel two different type of judges. We have skill and we have performance for four of them. So when you see the panel, I'm the head judge. My job is like handling all these boys next to me, and my responsibility that the event goes well and everything happening through the rules and regulations. And my main responsibility, but for the judges as well, to do the deductions, right? But it's not a really good thing, I know. So sorry. But so we had performance here. How the boys, the guys, my judges are sitting in the panel. One performance, one skill, one performance, one skill. Dot, dot, dot. So from performance side, what the judges are looking for about the music. How creative is the music? Have you ever heard this mix or this song ever? So we are looking for a one-of-a-kind, unique mix of music, what we've never ever heard before. So when you make the routine, we are not looking for something what we can hear in the radio every single day. Like, we had music, right, in the past days, like, I can say at least one song, what almost every, I don't say second group, but so many crews use. So try to make a music what is original, one of a kind, maybe editing or put together a mix what is really unique. From skill side, the judges will look after how do you use the music, what you have. What do you use in the music? Do you use the rhythm patterns? Do you use the upbeats, the downbeats, the different components of the music, the instruments, the lyrics? So if you just use the single 8 count, of course that's a low score. How we describe it, if I turn off the music, I have to see the music on your body. Thank you, ma'am. और कोई अब देख अबे वो वही लिख रहे हैं, अब देख। Hello everyone. I have two questions. Like first one is we are trying for national and international. Then what would be the criteria for the international after national? Like is there any differences we have to make our performance to be better for the international, or we can take the same performance which we are performing in the national stage?
तुमको क्या मेरे को गाली पड़ने वाली है? I don't think there is a difference in the criteria, right, for the finals, world final. I give an official answer. There is no any criteria. So in every single division, the best 5 crews nominated, qualified to represent this country at the World Hiphop Dance Championship. There is no any criteria that you have to change your routine. But my advice, there is a panel. We are quite experienced. Here, at the moment, on this event, we don't have the option to give you a feedback, personal one. But all of us here to support you guys, and if you qualify to represent your country and you have the opportunity to go to the World Championship, we are here for you. You send us a message, send a video, and we will give some advices how you can improve in the next month to go to the World Championship. Thank you so much. Also, what I try to say is, don't prepare for Indian championship. Prepare for world championship directly. In that case, you win here and then you go there and represent as well. Why you doing two different things? Why you compete here and then go compete there directly, which means you win already here, right? So look after the crews which are performing in the world finals. Keep them as your competitor teams, not in India. So because you're competing for the world finals, not Indian finals, right? That's the thing. Yes. Yeah. My next question is, basically I have seen many crews that they are performing the same in the prelims, semi-finale and finale. But the points are getting ups and downs. In which part this is depending? So, first of all, we are not comparing crews to the other one. Secondly, we are all the time judging what at that moment we see on the stage. So maybe today you do something in this moment on the stage, but 10 minutes later it will be completely different. इसका नंबर चाहिए आपको? There are things what definitely won't change in the scoring, like how many stars are you dancing, because if you have the same routine, you are dancing 3 stars and you will get the same scores for the stars like yesterday. But otherwise, just let you know, I don't know that you know it or not, you can change the whole routine by one. The music, the outfit, the whole routine, anything. So the judges, when we finish with the prelims, we open a new day, a new life, a new page, and in the next round we are just judging what we see at that moment on the stage. So what can change the scores in the next day can change like your execution, your control, how do you execute the whole routine, your showmanship, your confidence. So there are a lot of things, but it's actually up to that moment, how you perform in that moment. Thank you so much. Anyone next? No. मेरा सवाल रवि सर से है। सर आपका तो क्यों अजीब है, तो मुझे बस जानना था कि क्यों लेके ग्रो करना, मतलब क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वेस्ट बंगाल, और एक छोटा सा मतलब टाउन है, वहाँ पे मतलब क्रू लेके आगे बढ़ना या सोलो भी वैसा मतलब कुछ सीखने को नहीं मिलता है। तो मैं बस जानना चाहता हूँ कि आप जैसे आपके क्रू को लेके मतलब आगे बढ़ रहे हैं और बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब कैसे वो चीज़ मतलब स्टेप बाय स्टेप ग्रो करें, मैं अपने क्रू को लेके वो चीज़ कैसे स्टेप बाय स्टेप ग्रो करूँ ताकि मतलब आपके जैसे आपके जगह पे आ सकूँ। You'll understand if I talk in English? Yes, sir. Okay, sit down.
So your question is how I grow my crew, like step by step. How did I do it, right? So I was just discussing, with Karthik about it in the morning. We were just discussing about it like normally. So I just came. This is going to be the second time I'm going to share it, but I'm going to keep it short. So the only way that you can grow your crew better and better is only by experiencing it. Because my crew, the place where I come from, it's so different. Your crew, I don't know whether you have trained the people from the scratch and then taking them, or whether you formed a crew who are already trained. So I don't know how your crew works. So it depends on the experience that you get with them. Always try and be a good leader, right? Hello. Don't try to be the boss. Boss is someone different. Leader is someone different. Leader is someone who lead by example, right? So you try and be that person. People will inspired by you, and then they will follow the steps whatever you show, right? Try and be a good leader. सर जैसे क्रू को लेके बहुत सारे क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो मतलब हर एक मेंबर में मतलब सब कोई वैसे नहीं होते फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, या फिर सबका बैकग्राउंड सेम नहीं होता है। तो जितना हो सके मैंने किया, बट मैं सर आपका मतलब सुनना चाहता हूँ वो चीज़ की ऐसी सिचुएशन पे कभी आपने अगर फेस किया हो तो वो चीज़ से कैसे आपने मतलब वो प्रॉब्लम आपने कैसे टैकल किया है? What type of situation? मतलब क्यों में ऐसे कोई Financial situation. It's very hard again. It's very personal. I don't know how financially good your students are, and that's mine is very different. And how good I am financially stable, already. So there are so many factors. But I would always love to say that you try and give more. You as a leader try and give more. That's more important, right? Even financially, how much ever you can give instead of taking from them, right? Try and give more, and you find ways. Eventually you'll find ways to help your team financially. For me also it was really tough, but now it's okay. Now it's going good, because when we started, it was so tough for me to manage myself financially and then look after the crew. But now somehow we all face the struggle together, because I showed them I can be with you in all the struggles. So they believed in me, they followed me, and then now we all are doing good. I'm doing good, and my crewmates individually is shown to the world. People know them. It's not Ravi Verma's crew. It's Naval. It's Anish. It's Isaac Naveen. Everybody knows their name individually. You know what I'm saying, right? Even though they are my crew, but they still know them individually. So we grow like that. And then now they started, getting good money. Financially, they have become stable. And now it's quite easier for us. But back in the days, it was really tough. But somehow we managed. We just, we didn't give up. That's more important. Many people give up, but we didn't give up. सर जैसे कि कोई भी क्रू में 4, 5, 8 जितने भी मेंबर्स हो, तो वो एक जगह पे आके अगर क्रू कहीं पे कुछ नाम बना भी ले, तो वहाँ से जो आपने जैसे अभी बोला कि आपके ग्रुप भी थे, आपके अभी सारे डांस इंडिविजुअली अपना नाम भी सेट कर चुके हैं, तो उसके लिए कुछ टिप्स अगर थे कि इस क्रू में अगर 8 मेंबर्स हो, तो अगर ग्रुप में उन लोगों का कुछ हुआ है तो बाकी आगे जाके वो लोग इंडिविजुअली कैसे मतलब वो चीज़ को निकाले, कुछ टिप्स सर? Very easy. First, you grow, and you let them grow. Thank you so much, sir. और Okay, check. Okay, check.
यू गॉट इट। और कोई बोलेगा तो हाथ ऊपर करना, ऐसा कुछ नहीं। इफ यू हैव अ क्वेश्चन यू कैन। और तुम्हें, अरे बाप रे, हाथ दुखता दे, कमर मोड़ो। तुम्हें कुछ नहीं पूछना पक्का। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इफ यू हैव अ क्वेश्चन डायरेक्टली पूछो। मैं पूछूंगा इसलिए तुम मत पूछो। मेरे को क्वेश्चन पूछना है कार्तिक सर और हिपहॉप से। जैसे कि कुछ भी फाउंडेशन हम लोग शो कर रहे हैं, तो सपोज 4 लोग फाउंडेशन कर रहे हैं और एक लोग पावर मूव्स मार रहा है, एक बंदा। तो और ये एक सेक्शन हुआ। सेकंड सेक्शन जैसे पॉपिंग कर रहे हैं, फाउंडेशन कर रहे हैं, तो सेम वो पावर मूव्स की जगह पॉपिंग का पावर मूव्स कर रहे हैं। सपोज जम करके हिट किया, तो दोनों में मार्क्स जो पावर मूव्स का होगा सपोज एक ही होगा या फिर उसका अलग होगा, क्योंकि वो पावर मूव्स पॉपिंग में वो दिखा रहा है। सो पहला तो चीज़ ये है कि पावर मूव के लिए कुछ अलग से मार्क्स है ही नहीं। देर आर नो स्पेशल डिफरेंट सेक्शंस फॉर पावर मूव्स और एक्रोबैटिक मूव्स और एनीथिंग रिलेटेड। देयर इज जस्ट ओनली फॉर्मेशंस, एंटरटेनमेंट वैल्यू एंड एंटरटेनमेंट वैल्यू। हम लोग कितना एंटरटेन होते हैं, एट द सेम टाइम ऑडियंस कितना एंटरटेन होते हैं उसके लिए। सो वट एवर यू आर डूइंग, दिस इज जस्ट शोइंग योर क्रिएटिविटी, लाइक यू आर competing with other crews and चल रहा है। So you are competing with the other crews, so we just constantly keep that in our mind. Like whenever we are processing, whenever we are creating our art, we just keep that in our mind. Like we need to go that be smooth. We are not going and chilling, and we don't have to do that. We have to go like we have to battle with every other crew who are going to compete. So that's the way you put your creativity, like just to win. So this is just the similar thing you said, like कुछ जो पॉपिंग वाला कि मैं पावर में उड़ के तूने कुछ किया, अदरवाइज कुछ एक्रोबैटिक किया, या फिर एनीथिंग लाइक कुछ भी अगर अपन कुछ भी थ्रेडिंग वगैरह कुछ निकाल के क्रिएटिव दिखाए। So it's just putting some extra marks into your entertainment value thing and your formation thing, the way you have created the formation. And maybe if you use the stage correctly, like 4 people are dancing and the one guy is dancing over there, then there might be an extra mark in stage use. So that's how you distribute the marks. So definitely, but at the end, let's not stop thinking creative. Let's just be very creative whenever we are creating, whenever we are cooking anything. Let's be very creative and do whatever you can, like ऐसा सोच के खुद को रेस्ट्रिक्ट मत करना कि मैं ये करूँगा तो इसको मार्क नहीं है। नहीं, किधर ना किधर से एंटरटेनमेंट वैल्यू में बढ़ जाएगा वो चीज़। सो कीप एंटरटेनिंग। थैंक यू सर। I just want to add, जब भी कोई स्टाइल को देखा जाता है ना, जैसे 8 लोग का मेंबर्स हैं, 8 लोग हैं, ठीक है, और एक स्टाइल आप परफॉर्म कर रहे हो, लाइक पॉपिंग कर रहे हो, तो मेजॉरिटी जैसे 6 लोग पॉपिंग कर रहे हैं और 2 लोग कुछ कर रहे हैं, तब वो काउंट होगा। अगर मान लो आपने पावर मूव मारा, आपके क्रू के बाकी लोग सब पॉपिंग कर रहे हैं और सिर्फ आपने पावर मूव मारा, तो पावर मूव ऐसे काउंट नहीं होगा, क्योंकि स्टाइल्स को काउंट करवाने का एक सिस्टम है। जैसे कि प्रॉपर एक स्टाइल को यहाँ पे 16 काउंट उस स्टाइल के दिखाए थे, 8 और 16 काउंट स्टाइल के, और उस स्टाइल में भी व्हाट यू आर शोइंग, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस, आप किस लेवल पे शो कर रहे हो वो मैटर करता है, ठीक है। तो आप उसे कंबाइन कर सकते हो, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आई पर्सनली सजेस्ट कि ऐसा मत करो कि कोई एक मेंबर निकल के एक चीज़ कर रहा है और बाकी मेंबर कुछ और कर रहे हैं, क्योंकि आप इतना एफर्ट भी लगा रहे हो, पर उस चीज़ का आपको मिलेगा, क्रिएटिव सेक्शन में मिलेगा, एंटरटेनमेंट वैल्यूज में मिलेगा, पर स्टाइल्स में नहीं मिलेगा। और माय पर्सनल सजेशन टू ईच एंड एवरीवन, आई एम स्किल दिस, तो उसके अंदर मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जब आप 3 स्टाइल्स करते हो, प्योरली 3 स्टाइल, तो आपको 10 मार्क्स मिलते हैं स्ट्रेट अवे। तो उस चीज़ को मत को, क्योंकि हमने देखा है इवन यस्टरडे कि इतने क्रूज थे, दे आर सो गुड, बट उन्होंने सिर्फ एक स्टाइल करा और एक स्टाइल का आपको 2.5 मार्क्स मिलता है, वैरायटी ऑफ स्टाइल में 2 स्टाइल का आपको 5 मार्क्स मिलता है, और मोर देन 3 यू गेट 10 मार्क्स। तो ये ऐसे मार्क्स हैं जो आप करोगे। फिर जब अगर आप 3 स्टाइल दिखा रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको 10 मिलता है, पर डिफिकल्टी कितनी है उन तीनों स्टाइल की, उसके मार्क्स अलग है।
अगर आपने बेसिक दिखाया तो शायद आपको 1 2 3 मिले, आपने इंटरमीडिएट दिखाया तो आपको 4 या 5 मिले, आपने अच्छा दिखाया मतलब एडवांस यू शोन ऑल द एडवांस स्टेप तब आपको 8 या 9 मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ब्रेकिंग स्टाइल को कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है, इट कम्स विद डाउन रॉक्स, टॉप रॉक्स, पावर मूव्स एंड फ्रीजेस। जब एक क्रू ये पूरा दिखाएगा ना टुगेदर देन इट्स कॉल्ड एज परफेक्ट स्टाइल और तब उसको मार्क्स मिलेंगे पर्टिकुलरली उस टाइप के। आप पॉपिंग कर रहे हो तो पॉपिंग के सारे एलिमेंट जब आप दिखाओगे और ऐसे मत करो कि चार काउंट या 6 काउंट आपने पॉपिंग करी फिर 6 काउंट आपने रिवाइंड कर दी 6 काउंट कर दी तो कहीं नहीं मिलेगा। इससे क्या पर्टिकुलर 16 काउंट और यू कैन मर्ज ऑल्सो 8 काउंट पहले पॉपिंग 8 काउंट कुछ और दिखा फिर 8 काउंट पॉपिंग दिखा दी तो तब यू गेट मार्क्स। मतलब समझ में आया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। And more thing, when you're trying world level, like there is no term called foundational names, like without it, अगर तुम प्रश्नों को मान रहे हो, like you know, basic level पे करके फिर एक technically a different variations with variations को, but if you are aiming for world, just check out the couple of other courses now. They are playing with the variation and the advanced. So for that, you need to go through the styles regularly. You have to practice so that gets into the muscle memory and your muscles, so that you can play with that. And everybody can do a different move, whatever style you are switching to. The foundation na समझ रहा है वर्ल्ड लेवल पे तो अच्छी चीज सही नहीं है। Thank you sir. Even you can look for the international crews also. जिन्होंने गोल्ड जीता, वर्ल्ड कप, सिल्वर जीता, उन क्रूज को you should watch. You'll get to know that how did they perform, and then you'll get all the things that how you can prepare yourself for the world and stage like that. Thank you sir. हर्ष हेलो आई हैव द क्वेश्चन जो आप लोगों में से जो भी परफॉर्मेंस जज कर रहा है जब हम लोग ग्राफ करते हैं ग्रुप का तो बहुत सारे टाइम पे ऐसा हो जाता है कि सेम फॉर्मेशंस रिपीट हो जाते हैं मतलब लाइक अ वी ठीक है तो वो भी होता है इंटरनेशनल्स पे भी होता है लेकिन मतलब वो स्टेप शायद वो वी पे बहुत सही लग रहा है तो लेकिन अंदर ही अंदर ये होता है कि वो 2 या 3 बार रिपीट हो रहा है लेकिन वो वी पे ही अच्छा लग रहा है तो हाउ टू डील विद इट जब हम लोग कोरियोग्राफी कर रहे हैं उसके साथ कैसे डील करें? It's not only formations but also styles. If you are doing locking, you'll multiple times you will be doing wrist rolls and at some points, in other styles also. So we just try to keep like everything. We just try to keep it fresh. Like the feeling is supposed to be fresh. You can use B, you can use W, but what we suggest is just create some very fresh formations. लाइक कोई किसी ने भी कुछ ऐसा किया नहीं रहेगा ना वैसा फॉर्मेशन तुम लोग कोशिश करो बट बेसिक फॉर्मेशन जैसा वी है ए है उसके बाद डायगोनल लाइन है दिस इज गोना हैपन लाइक मल्टीपल टाइम्स व्हेनेवर यू आर कोरियोग्राफिंग correctly so that's fine so but whenever you are repeating the formation make sure that feeling doesn't repeat like if you are doing a diagonal line and diagonal line में you guys are doing maybe just that popping 1 by 1 वाला चीज़ें कर रहे हैं एंड उसके बाद वो अल्टरनेट वाला चीज़ तुम लोग कर रहे हैं बट उसमें ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है किधर ना किधर वो सेम ही लगेगा और फीलिंग सेम ही लगेगा सो मेक श्योर व्हेनेवर यू आर अगर ऐसा आता है आपकी कोरियोग्राफी करने के टाइम पे कि कुछ अगर रिपीट हो रहा है जस्ट मेक श्योर कि वो फीलिंग चेंज हो वो मूड चेंज हो वो बनाने का भी मूड चेंज होगा तो डेफिनेटली देखने वाले का मूड डेफिनेटली चेंज हो जाएगा सो या दैट्स इट One more. Yeah. Arpit sir, I have a question for you. Veterans पे जब कोरियोग्राफी देखते हैं मतलब उधर से बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेशन चेंजेस था तो लॉकडाउन के टाइम पे आप लाइव आए थे फिर भी मैंने पूछा था लेकिन उसको आपने बोला था कि क्रू के साथ ज़्यादा प्ले करो फॉर्मेशन बनाने के टाइम पे आप कैसे करते थे और आपका माइंडसेट कैसे रहता था? So basically what happens, whenever I'm sitting with my crew, whenever I used to sit with my crew, so at that time, studio एक blank canvas के जैसा मेरे लिए काम करता था.
So वो blank canvas है and there are no rules for me whenever I am creating. Like I just throw my paint around here and there and I just try to create a very creative art. Sometimes sometimes there are a lot of formations जो हमने D plus में भी use किए हैं जो वहाँ पे reject भी हुआ था बहुत सारे जनों ने reject भी किया था which is actually very artistic but at the same time वो समझ नहीं आता देखने के लिए. So just keep in my mind like I just need to listen to the song and whenever I'm listening to the song what feeling that I'm getting, what kind of feeling I'm getting while listening to the song, and I need to be creative and I need to be very closer to that feeling whenever I'm creating. And I just make sure कि I don't work too much whenever I'm choreographing for my crew. I don't work too much like maybe maximum 2 or 3 hours per day. उससे ज़्यादा मैं काम करता ही नहीं हूँ क्रिएट वाला क्योंकि फिर मेरा क्रिएटिव वाला चीज़ें फिर बार बार रिपीट होने लगता है चीज़ें. तो उसके बाद मैं घर जाता हूँ, आई टेक गुड अमाउंट ऑफ स्लीप एंड देन लेटर ऑन आई वेक अप एकदम फ्रेश मूड में आता हूँ. एक क्रिएटिव एस्पेक्ट आता है and I make sure I research a lot. I watch a lot of crews like Chicha, Vibe. There are so many competitions happening around the world. I watch each and every participant and I just understand their aspects like their intention. ये क्या फील करता है, ये बंदा क्या फील करता रहेगा ये क्रिएट करने के टाइम. So I just understand that thing and I try to bite that feeling, not that moves and not that formations. I just try to bite that feeling that whatever that guy is feeling while creating that, I need that feeling and I need to put I need to create something which is related to that feeling. So yeah, and rest is like just happens. And so both of your questions are about formation. Both of your questions about formations. See, so I'm just going to add to what Karthik mentioned. See, for example, you are competing with 50 different crews, right? Now tell me how many crews will have V formations and W formations? Everyone. Or almost, or at least 45 of them, right? So for us, we have a criteria which is formation, so we're gonna mark on that as well. So when we keep on repeatedly seeing this, do you think we're gonna mark it like really creative? No. So we will just consider it as just a formation, but there is nothing more creative about it. Now, how will we remember your V formation is? You will have moments when you have V. For example, you come in a V, you do something, and then you'll be, oh, I've never seen something move like that. Some people move like that. So, and then that formation really helped your movement. That helped your feeling. Helped us to feel better when we watched it. So we will remember your formation for that, right? Otherwise, if it is just a move, we won't even, keep thinking about, okay, they did a V, they did a W, let me give them one point. No. So how creative you play with your V formation, that's more important. Whether you have levels and like you have a formation and levels together, so which means that's creative, right? Or something creative, bring something creative about your formation, because we cannot keep on doing creative stuff throughout the performance, that's very difficult. But you can be creative here and there with your formations, which helps us to remember your team. When we think about, okay, that's formation, we need to mark that, and then oh, this crew really has some good formation which registered in my memory. You know what I'm saying? So that's very important when you think about formations. Yeah? Thanks a lot. My question is like हमारे crew में हम creativity dynamics कम दिखा रहे हैं बट लेकिन हम फाउंडेशन तो प्रॉपर स्टाइलिश तो दिखा रहे हैं अच्छे से तो उसका हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं. मैं बोल रहा था कि अपना मैं वो जो स्केड्यूल करा हुआ लाइव डिलीट कर देता उसका ज़्यादा व्यूअरशिप नहीं आ रही है. Repeat your question. हम क्रिएटिविटी डायनेमिक्स कम दिखा रहे हैं मतलब पर लेकिन हम प्रॉपर फाउंडेशन और स्टाइल अच्छे से दिखा रहे हैं तो उसका हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं. दिखा रहा है और एक लाइव दिखा रहा है. देखो भाई आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा लेकिन आपको वो स्टाइल्स के लिए मार्क्स मिलेगा. अगर आप क्रिएटिविटी नहीं दिख रहे, देखो जैसे कि देयर आर
देर आर सेट हम लोग का एक डिवाइड है कि कोई स्किल्स जज है, कोई परफॉर्मेंस जज है। तो आप स्किल्स वाले जगह पर अच्छे से स्कोर कर लोगे, परफॉर्मेंस वाले का क्या, आपने स्टेज यूज नहीं किया तो फिर परफॉर्मेंस वाला जो जज है वो आपको मार्क्स नहीं देगा पर स्टेज यूजेज के लिए। आपका स्पेसिंग में कुछ दम नहीं था तो स्पेसिंग में आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। लेवल्स में आपने कुछ ज़्यादा दिखाया नहीं, 5 लेवल्स आपने टच नहीं किया, आपको उसके लिए मार्क्स नहीं मिलेगा, है ना। परफॉर्मेंस जज का सिर्फ यही काम रहता है कि कितने बार लेवल्स टच हो रहा है, स्पेसिंग में कितना अच्छा क्लीन चीज़ें हैं और कितना क्रिएटिव फॉर्मेशन है, यही देखना काम रहता है। बाकी तो डांस तो देखते नहीं है परफॉर्मेंस वाले, डांस देखते डेफिनेटली बट पूरा टाइम ऐसे रहता है कि हाँ स्टेज यूज हो रहा है वो। सो यू वोंट स्कोर इन दैट इन दोज डिपार्टमेंट्स, सो यू नीड टू बी बैलेंस। इंस्टाग्राम का लाइव चलेगा, पकड़ के बैठो। हेलो, आई जस्ट वांट टू टेल यू, देखो एचएचआई में जब आप आ रहे हो, सबके लिए बता रहा हूँ, जब आप आ रहे हो तो ये मत सोचो यार कि मेरा ये टॉप नॉच है और मैं अच्छा कर दूँगा। लाइक एक पॉइंट, आप क्रिएटिविटी पे भी ध्यान दो, आप स्टाइल पे भी ध्यान दो, आप स्पेसिंग पे भी ध्यान दो, आप फॉर्मेशन पे भी ध्यान दो। स्पेसिंग का मतलब अगर 5 लोग खड़े हैं तो सबके बीच का स्पेस बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो 20 टाइप ऑफ थिंग, हर एक चीज़, इन चीज़ों पे ध्यान दो, हर एक पॉइंट पे, सिर्फ एक ही चीज़ से नहीं होगी। स्पेसिंग और एचएचआई, अदर कॉम्पिटिशन यू कैन परफॉर्म एज यू वांट टू परफॉर्म, बट एचएचआई में आपको हर एक रूल्स एंड रेगुलेशन के रूल्स के हर पॉइंट को दिखाना पड़ेगा, तभी आपको पॉइंट मिलेंगे, अदरवाइज पॉइंट नहीं मिलेगा। हाँ पर्टिकुलर चीज़ में मिल जाएंगे पर बाकी उसको तो शायद ना मिले। बट मैं एक सॉरी मैं सिर्फ अपने एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि वेटरन्स जब भी फर्स्ट टाइम एचएचआई किए थे और एचएचआई करने के पहले हम लोगों ने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स किया था, बट द फर्स्ट टाइम व्हेन आई रेड द रूल्स ऑफ एचएचआई द सबसे ज़्यादा फायदा मेरे को हुआ, मेरे ग्रुप को हुआ, बिकॉज वी अंडरस्टूड कि whatever HHI is demanding is actually for the betterment of the that visual that makes you guys look really good. If you guys are not focusing on stage covering, so this is the demand of HHI, and that will make you make you use the stage, which will actually benefit your crew. See, understanding. So I would just recommend each and everyone go through the rules and regulations thoroughly. Like आधा काम तो उधर ही हो गया. When you understand the rules, there are a lot of people. There were a lot of adult crews who were using props. Like we got 2 or 3 crews who were using props. But there is a deduction. Huh? So just read rules and regulations correctly. That will benefit you. Like whenever you come for next time, if you guys come for the HHI or any other competition here, if you go for any other competition, rule of follow rules of HHI. That will benefit your crew, which will make you perform better in any stages. So I just believe that. वहाँ पे जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है ना, ब्लैक टी शर्ट आप भी होना चाहिए। ये रजिस्ट्रेशन डेस्क जहाँ पे ना, वहाँ पे थोड़ा और आगे आइए। नहीं ये साइड नहीं, स्ट्रेट मैं दिख रही हूँ वाइट टी शर्ट पहने हुए। हाँ कैमरा दिखा रही है। हाँ रजिस्ट्रेशन डेस्क। Check. Yeah. Okay. So this is not just for him. It's for all of you. I've been in the dance scene for 15 years and was also competing for so many years. Now I don't compete anymore for at least some time. I might get into competition. Now I'm not competing, but out of all my experiences, HHI is one of the most well-organized competition which respects the dancers, which respects your talent, which respects your time, which respects whatever you did to come onto this stage.
HHI is the only competition. I've been to so many competitions, I've judged so many competitions, but this competition takes care of all your emotions and feelings, and it respects all your trainings, right? That's why it's so carefully designed with so many different criteria. You know what I'm saying? So, like how you asked, like how Karthik said, some people are strong in some criteria and some people are strong in the other criteria. So, which means it doesn't make you the best. You have to be strong in each and every criteria to win this competition. Otherwise, it's unfair, right? You be good in one criteria and you win the competition. It will be very unfair for the other crews. So, before you guys come to the competition, it's very important for you to go through the rules and regulations like properly and also read the criteria. Criteria are so important. If you guys know the criteria, each and every criteria really good, then it's so easy for you to win this competition. Trust me. Trust me, I know. Okay? Because I know so many good crews, so many good dancers who couldn't make it through this competition because they do not know the criteria well. Because we are marking through the criteria. We're not marking through the emotions. For example, he likes to move such way, more like a different movement. I have a different movement. She has a different movement. He has a different movement. Like, all of us have our own interests. I like this style, and he likes the other style. You know what I'm saying? Some crew who competes, who looks like me, then I'll be like emotionally connected and give more marks to them. But over here, it never happens that way. You know what I'm saying? Yes. Even though we have emotion, we have to mark it like a computer properly, each and every one well designed. Right? So yeah, go through the criteria and rules and regulations like before you start preparing for your competition. Right? Thank you, sir. Yeah. All of you. Anyone? Okay, say it. Okay, excuse me to everyone. If you have any question about your performance, about the hip hop, it's not about the Indian hip hop dance championship. If you about your choreography, style, anything, we have India's benches, we have. If you have any question, any मतलब कुछ भी सवाल होगा आपके मन में, you can ask directly. But फिर से बोल रहा हूँ, ये if I'm there, everyone would survive. But as an NCI, I can't ask you. तुम्हारे पास chance है, make it gold. ठीक है? What do you like? Okay, just a moment. और उसके बाद take it with you. I just want to know about light fit क्योंकि बहुत सारे क्यूज लाइट फिट कर रहे हैं और we started लाइट फिटिंग कोलकाता तो हम लोग भी कर रहे हैं लेकिन as per थर्ड जनरेशन हिप हॉप के हिसाब से वो एक्सआई के रूल्स एंड रेगुलेशन पे लाइट फिट नहीं है तो अगर हम लोग वो कर रहे हैं तो वो किस कैटेगरी पे जज हो रहा है स्टाइल के बेसिस पे या फिर दूसरे कुछ बेसिस पे आई जस्ट वांट टू नो So we have a list in the regulations what are officially accepted styles at the moment. We know that there are so many styles and day by day are born new styles. Yeah, so like it is a new thing. What is not on that point at the moment that would be an accepted style just separately. So it's part of the hip hop at the moment. So we have like locking, popping, breaking, house, whacking, voguing, also dancehall, crump, what else? Stomping, gumboots, and hip hop. Yeah, I think that's enough. Yeah, social dance, yeah. So it's at the moment it's separately not counting as a style. But we can count it as, anyone's style. But it is not complete counted as a light feat, but it will still considered as a style. For example, you have your own style. Your crew has a different type of aura, which has also considered as one of the styles. For example, if you have king, you have and your own thing going on, which means 3 different styles are there. You know what I'm saying? Yeah. We got marked for it, right?
Yeah. So you will get the score for the like, so that you will get the score for that. So I don't say that you it won't be marked. So like if you have three styles like locking, popping, and your style is like it, that it will be three different styles. So it's counted. It's counted. Just not, we don't say like the name of the style. We would say like hip hop choreo. Yes, but Yeah. it's marked. Yes, definitely it's marked. कार्तिक सर अपनी स्टाइल कैसे पहचाने लाइफ में अभी सिर्फ मेरे को 1.5 साल हुआ है डांस चालू करके और अभी मैं फर्स्ट टाइम इंडियन हिप हॉप कर रहा हूँ तो मैं अपनी स्टाइल कैसे पहचानूंगा लाइक फ्री स्टाइल करके और नॉलेज गेन कैसे करूँगा क्लास में प्रैक्टिस करके अलग अलग कैंप्स करके या वर्कशॉप करके Okay, cool. We can do like this. I gave you a question. तो ये मैं उनके बिहार में बोलता हूँ. इस क्वेश्चन for everyone, मतलब everyone give answer best. Okay, then go with this side. डोमिनेट लाइव You started dancing, correct? What makes you start dance? What you like the most? Like the time? Hip hop. Okay. You see that dance that makes you dance, correct? That's your style. Work on it and then explore all the other things. And then you will get to know that what style you like. So I think you should how do you bring out your own style, right? So you learn as much as you can, like all the different styles, you know. And after a point of time, once you get experience, when you listen to the music, you can automatically bring out your own style. But after you learn a lot, you don't have to get identified with others, you know. You don't have to do the same thing what the other person is doing. So at that time, you know a lot of things, but at the same time, you try to bring out your own flavor, and that's your own style. Okay, I can answer this question in so many different ways. See, every different style comes from music. It doesn't start just like that, right? So first you need to understand music more. You need to start listening to different types of music. What type of music attracts you more? You know what I'm saying? I also believe that you cannot become someone before you follow someone. You know what I'm saying? So when I started dancing, I just wanted to look like some people. I just wanted to look like him. And then after a point of time, I was like tired of it. Now I need to find my own set. So it always worked like that. It worked like that for me. For me, I don't know how it's going to work. But I believe you need to spend more time with the music and the people who inspire you. So that you can find the interest in what you wanted to do. And for example, there are dancers in the world who actually find their own style, found their own style. For example, Tight Les Twins. You think Les Twins has their own style, but do you think they cannot do the other styles? Do you think? No, they can do other styles as well. They can do house dance, they can do locking, they can do hip hop, they can do all the other styles as well. But then they learn everything. So you need to learn everything. You need to understand the music, where it comes from, right? Then it's a very big process. You cannot do it like this. Nobody born with a style.
very, like, you need to spend time on it. After a point of time, you will get tired of all of those things, like the things that you're following, and then you'll find your own style eventually. It takes time. Um, yeah, so when I started about almost 30 years ago, I knew that I will be a dancer. That was my destiny, that was my passion. All the time when I heard music, my body just started to move by itself. So I'm not sure that your style is hip-hop. I'm not sure. So I would say that as much as experience and knowledge you can have, just take all of them. Because maybe now you say that hip hop is my style. But when I started to dancing, I believed that, okay, I will be a jazz dancer, a ballet dancer. But I've learned after that contemporary, like standard, like Latin, like all the different street dance styles. And now I know that, oh my gosh, I just recognize that this is my style, or this is me. So, and the other thing is, I don't know how much do you know about hip hop, if it's your style. So every style has foundations, have pioneers, have history. So it's not just about the moves and not just about physical things, it's about the knowledge as well. So you will understand a lot of things after that, that if you are going back about the styles and everything. Okay. See, when it comes to style, it will not happen that easily because style is in you, how you carry yourself, right? So when you practice any style, just stick to that proper, like have some proper engagement in the craft you practice, right? In order to that, you need to practice each individual styles so nicely so that you can experience that and create a better impression when you perform. But it will take years. But obviously today you will feel like today you are in one style, but after 3 years you will feel now I have a different style now. So it's maturity. So it's a process. Today you will feel like, okay, this is my style, but that happens with everybody. But slowly we learn and we try to be introduced and we try to meet so many, and so we take different inspiration, motivation. When we look at them and then they feel like, okay, we are liking it. Then slowly we'll try to put their craft in our, and we'll try to present it in our own way. So that's how it is. It's not an easy process, but stick to it, practice, work hard, we'll be there. Thank you. I think everything is already answered, whatever I wanted to tell. But I think you don't need to pressurize yourself for creating a style. Like, you shouldn't. Uh, that is not in your control, and that shouldn't be in your control. Like there was a time where a lot of people used to bite me in India, and a lot of crews, and even I got sick of that song, of that Kartik. So at that time, I used to be a big fan of Dan Martin, and I was never a crumper, but I used to love the crumping art. And at the same time, I used to watch a lot of reality shows in India. And in India, everything is like, please, cut to cut. Everything is like, yeah. So I used to love that kind of stuff. So basically, it's just, I used to admire each and every dances. Not only hip hop, not only street. I used to love each and every, there is one spinning dance. They just keep on spinning. They just keep on. I think, no, not Rajasthan. It's international dance. Yeah. Those military people, Russian. Yeah. So I watch each and every dances, and I am always, my mind is always blown. मेरा दिमाग एकदम ऐसा खराब है, अरे बाप ये क्या हो गया है? And somehow I try to know whole day I am in that character. And whenever I listen to good music, the whole day I am in that character. If I'm listening to Tupac, the whole day I'm going to be Tupac. The other day if I'm going to listen to Taj Sultana, whole day I'm going to be like that only. So it's just, I'm just moving. Everything is like making me move, and I'm just keeping on moving. And I'm just enjoying the whole process. It's just, I'm not pressurizing anything. A lot of people DM me now also. Karthik sir, we miss the old Karthik. And it's just happening. So you shouldn't pressurize yourself.
Yeah, for me it's like when you'll explore, जब आप आगे बढ़ते जाओगे ना, जो you'll get experience, आपको experience मिलता जाएगा. और जो आपके साथ हो रहा है ना, वो सबके साथ होता है. हम सब उस चीज़ से गुजरते हैं. When I started, I liked rewind very much. That's why I get into dancing. But then I used to see a person and he's do popping very well. So I get attracted towards popping. But it doesn't mean कि मैंने rewind छोड़ी. Still I love it. From last 2 years, I'm liking trumping very much. Yeah. Yeah. So the popping person I love to look out, that is Saurabh Benjwal, my leader, my true leader, right? And जब उसको देखा, तो पता नहीं अपने आप ही पॉपिंग से प्यार हो गया, the way he is doing it, ना? तो ऐसा मतलब ये नहीं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे आप एक्सपीरियंस लेते जाओगे और धीरे धीरे आपको समझ में आएगी. और कभी अगर लाइफ में ऐसा फील हो रहा है कि आई एम गेटिंग कंफ्यूज, तो जस्ट सोचो कि आपको क्या अच्छा लगता है. आपको डांस करना अच्छा लगता है ना, इट डजंट मैटर विच स्टाइल यू डू, जस्ट मैटर विच स्टाइल यू लाइक. आपकी बॉडी किस स्टाइल को एक्सेप्ट कर रही है और ये टाइम के साथ चेंज होगा. और आप ये सोचो कि अगर आप ज़्यादा स्टाइल जानते हो तो विल बी अ ग्रेट डांसर. आप हर स्टाइल के पर्सन के साथ बात कर सकते हो. यू कैन टॉक टू अ बिगर, यू कैन शेयर नॉलेज विद हिम, यू कैन टॉक टू अ कॉपर, यू कैन टॉक टू अ लॉकर. ये सारी चीज़ें ना, तो ये नॉलेज है. नॉलेज यू कैन गेट फ्रॉम एवरीवेयर. तो इस चीज़ को सोच के करो कि डोंट गेट कंफ्यूज. और वो भी हो तो कोई नहीं, life will teach you everything. By the time you learn each and everything by the time. That's what I want. I have the same thing just because we have practiced a lot together. So we had a mentor, Saurabh Bengal. He was one of the finest poppers that we had time in India. So at the very first time, when we were friends, we just met him. We saw him dancing like wow. That he doing. In those days, it was a small town, there was music. And after that, I would simply say that learn all the style, explore yourself, and you get to know. Thank you. Sorry, what was the question? मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, मेरे को नॉलेज नहीं करना है, तो मैं वो कहाँ से कर सकता हूँ? क्लासेस में अटेंड करके, कैंप करके और Start with music first. Yeah, but start with music. Irrespective whether आप कोई भी style सीखते हैं, doesn't matter. The problem right now is we are exposed to a lot of competition and internet and stuff like that. So we feel like we have a lot of time and we have a lot of exposure. But my advice to you is if you want to grow, irrespective जो भी आप style कर रहे हो, start with music. And because everyone honestly listens to very terrible music in India. At least seeing the competition in the last 3 days, I feel like nobody has variety or taste in music. Goes for everyone, not just you. So start with music. If you find the right music, you will find all the connection to the culture, to the people, to the art form. It has to start with the right sound, right? It's like very simple. Music जो है ना, वही आपका main guidance और teacher है. If you fall in love with a type of music, eventually आपका जो instinct, जो human nature है, will be more curious. Be like, oh, ऐसे music में कैसे move कर सकता हूँ? Or like, who are these people who are actually dancing on this music? And that's where your journey begins. And आप कितना साल से कर रहे हो? 2 साल, 1.5 साल बोल रहे हो? 1.5 साल. Good things take time. Good things take time. 1.5 साल is hardly anything. It's like 2 days in your whole dance career. अगर मैं briefly बोलूँ, it's hardly anything. I'm thinking almost 20 years. I still know what my style is. I still don't know. So start with music. हेलो सर. तो बाकी डांसर होते हैं तो हिप हॉप में सब बेस्ट होते हैं और डांसर. मेरे को फिर मेरा जो मानने में हिप हॉप करूँ, लॉकिंग करूँ, पॉपिंग करूँ, क्रम करूँ, तो मैं पूरे 4-5 स्टाइल और क्रम आगे एक्सप्लोर कर सकूँ. तो उसके लिए मेरे को सॉन्ग सुनना है, म्यूजिक राइटिंग स्ट्रॉन्ग करनी. तो और मैं क्या क्या कर सकता हूँ?
अपना क्वेश्चन एक क्वेश्चन शॉप में हुआ ना कंटिन्यू उसको लॉकिंग में बेचते हैं, कोई क्रम पे बेचते हैं, कोई हाउस में बेचते हैं। तो मैं होल्ड कर रहा था, इंतजार कर रहा था क्वेश्चन आप। हिप हॉप करता हूँ और क्रम करता हूँ, तो मेरा उतना बेच नहीं, खुद को मानता हूँ उतना बेच नहीं। तो मेरे को मैं आगे बढ़ सकूँ उतना 4 स्टाइल में बेच करके सब जगह एक्सप्लोर कर सकूँ 4 स्टाइल में। मेरे को ये एक ही स्टाइल में नहीं रखना है। पहले तो मैं आपको ये बताऊँ, देखो बेस्ट कोई नहीं होता, नो वन इज बेस्ट, एवरीवन इज लर्निंग। वी आर सिटिंग हियर, वी आर लर्निंग, यू आर लर्निंग, एवरीवन इज लर्निंग। बेस्ट ये होता है यार, आपने 30 साल देखी एक स्टाइल को, यू गेटिंग इट, 30 years you are given to one style, तब और लोग कहेंगे आपको कि यार ये इंसान बेस्ट है, लास्ट फ्रॉम 30 years is doing this and he is very good at it, है ना। तो अब आपको अगर क्रम करना है तो जितने भी पाइनियर्स हैं, पाइनियर मीन से जितने भी अच्छे क्रम्पर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप उनके वीडियोस देखो, ठीक है। साथ में थ्योरेटिकल नॉलेज भी लो कि व्हाट आर टर्म्स इन टर्म्स क्या होता है वगैरह सारी चीज़ें, मतलब उसके बारे में पढ़ोगे, प्रैक्टिकल भी लो, थ्योरेटिकल भी लो, तब आपकी नॉलेज बढ़ेगी। और दूसरा म्यूजिक इज द मेन थिंग, आप अपनी म्यूजिकलिटी को बढ़ाओ। जैसे जैसे म्यूजिक को समझता है तो सेम म्यूजिक प्ले हो रहा है, क्या पता मुझे म्यूजिक में मुझे बहुत कुछ सुनाई दे रहा हूँ और आपको भी बहुत कुछ सुनाई दे रहा हूँ, बट जब मैं तो सुनाई दे रहा हूँ तो आपको ना सुनाई दे रहा हूँ, आपको सुनाई दे मुझे नहीं सुनाई दे रहा। तो इट डिपेंड अपॉन द म्यूजिकलिटी लेवल यू हैव हो रहा है, ठीक है। तो आप ये बात कर सकते हो, आप उस फील्ड से उस स्टाइल से जितने आइडियाज हैं उसको उनको देख सकते हो, कैसे उसको कर रहे हैं, म्यूजिक को अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस अपनी अच्छी कर सकते हो, ठीक है। नॉलेज गेन करो, जो क्वेश्चन आपने पूछा ना उसका आंसर सबने दिया अभी लास्ट वो सेम ही है कि आपको नॉलेज गेन करनी चाहिए, नॉलेज अबाउट एवरीथिंग ऑफ म्यूजिक ऑफ योर स्टाइल, लर्न फ्रॉम द पायनियर्स एवरीथिंग। ये हर स्टाइल पे जाता है, ठीक है। आपने शायद ड्रम बोला और क्या बोला, लॉकिंग, पॉपिंग, हिप हॉप। अब जितने खाने शॉपिंग के आप उनको देखो वेर में आप नहीं ओजी तो यू कैन, तो देयर सो मेनी थिंग्स, देयर सो मेनी पीपल कैन लुक फॉर, अरुण अरुण तुम्हारे क्वेश्चन में ही तुम्हारा जवाब है। वही करो, मेहनत करो, ठीक है। Guys, please ask questions about how you can win this. Right? You guys are asking personal questions. In a workshop, after workshop, or you're not in a camp. You are here in HHI, and you should ask questions how to win, about how to win this competition. But you ask a lot of personal questions. Try and ask about HHI. See, so many of you are struggling in the competition. You're struggling so hard every year. You're still trying to win this competition, but somehow it is just not happening. So you should be having a lot of doubts about it. Ask us about that. जो स्ट्रीट डांस करते हैं कॉम्पिटिशन में जाते हैं तो कुछ लोग स्टोरी टेलीकास्ट करते हैं, स्ट्रीट को ये नहीं करते, ज़्यादा बोलते हैं जिसको कुछ नहीं है तो बोलते हैं आप लोग बेसिक ए स्ट्रीट वो करें, इधर स्टोरी के इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिशन में, ऐसा बोलते हैं। बैटल स्ट्रीट में या फिर कॉम्पिटिशन स्टेज में, स्ट्रीट डांस कॉम्पिटिशन में चल रहा है तो कुछ लोग स्टोरी टेलीकास्ट करते हैं, तो हम लोग स्ट्रीट करते हैं तो ज़्यादा, तो कुछ लोग अपना कोरियोग्राफी स्टोरी टेलीकास्ट करते हैं, तो हम लोग प्रॉपर हिप हॉप करते हैं। तो हिप हॉप को जब मैं जज को कमेंट पूछने जाता हूँ तो बोलते हैं आप हिप हॉप करें, आपके डांस में स्टोरी नहीं है, तो कुछ लोग स्टोरी को जज करते हैं कि आप स्ट्रीट नहीं, अगर यहाँ पे
आप कोई अगर सही जज बैठा होगा तो कोई स्टोरी को जज नहीं करेगा, वो डेफिनेटली उसका जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट के रिलेटेड डांस वर्सेस आपने क्या प्रेजेंट किया स्टेज पे, एंड व्हेनेवर यू आर डांसिंग ऑन स्टेज, सी so yeah, whenever you are battling at that time it is like only skills. At that time no concern, nothing. But whenever you're dancing on stage, you need to focus on a lot of things to entertain people. Like, you know, that there must be a lot of people watching you. So you need to, like, you know, musicality, dance, अपना जो कोरियोग्राफी में जो टेक्निक्स है, परफॉर्मेंस में जो टेक्निक्स है, वो सब चीज़ें तो चाहिए. But at the same time उससे तो impress करना ही है. But at the same time उसके अलावा a lot of people, you know, focus on creative aspects as well. Like yeah, again story is one thing, like concept is one of those things. और उसके अलावा कोई लोग बीच में gags यूज करते हैं to make it creative. कोई लोग अपने moves creative इतने रखते हैं कि उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती. So you need to have something like, you know, other than just moves के अलावा you need to craft, you need to have that knowledge to craft the whole thing. So it is not about showing your skills, it is about how you make the judge or the audience feel while you are performing on stage. I think disagree with one thing my fellow judges said about street not having concept or story or something. Everything that you do, तो आपसे बात कर रहा हूँ. Are you busy? Talking. और हिंदी में बोलो. तो मैं बोल रहा कि मैं एक चीज़ डिसएग्री करता हूँ जो कार्तिक सर ने बोला अभी, कि जैसे आप बोले कि स्ट्रीट में कॉन्सेप्ट स्टोरी या फिर स्टेज में ये सब होता है, वो सब ऑनेस्टली अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूँ बकवास है. शुद्ध हिंदी में बेसिकली जो है, अगर आप कोई स्टाइल, फर्स्ट ऑफ all these if you follow dances like Sala or Stomp or these dances are like, they have concepts and characters and story in their dance, but through the power, through the style of street styles. So stage is inspired from street culture. I hope you guys know that. Alright? The thing what adds in stage is the glam and the production. But that rawness is coming from the street. So अगर आप बोल रहे हो कि जैसे काफी एक पॉइंट अच्छा बोला, it also, if it's a good judge, they will know. So for example, if you're going to popping, if you're getting on a backing, let's say backing में उतर रहे हो, आपको सिर्फ बेस नहीं करे कि आपका टेक्निक सही है. You have to be a battle cat, जो हम लोग एक terminology use करते हैं, battle में like a battle cat, मतलब someone who knows how to respond to the question. His moves are the answer to the question of his moves. अगर कोई आपके साथ, for example, you and I are battling, you come first round and you're like, you know, आप सिर्फ मेरे को skill दिखा रहे हो, beat दिखा रहे हो कि ये clap और ये bass है, and you think that you got it. But I come, I have character, I have, let's say I don't have no style, I have character, I have a concept of you showing that, oh, you're showing boom and clap, but I'm thinking that boom and clap to a different story altogether, spontaneously. So all of this that you say, no, कि story या फिर street and stage, उस line को ना तो मिटा दो, क्योंकि all of this is just dance. If you are you have to be a good battle cat. If you can battle, you can perform on stage as well. It is that situation and environment. All of this मुझे भी लगता है कि बात करने में. But if I'm talking to you one-on-one pieces, I'm more raw, right? So what do I have to learn? I have to learn how to communicate better, not change my environment. So for advice to you will be like, eliminate all of this concept of like, you know, stage and street and storytelling here, but raw. It's a कुछ भी नहीं है. I have been in both scenarios, and what I realize is that you have to just be good at your craft and find a way to, you know, inspire and entertain in both categories. Like Salah is a street dancer, but I find the most entertaining performer ever. You know who Salah is? नहीं पता? And you're a street dancer. Think about your question.
Do you know Salah? आप सलाह को जानते हो? सलाह जो डांसर है, सलाह SALAA नहीं पता? हाँ? आप क्लाउड को जानते हो? I'm not threatening you. I'm being serious. I'm just trying to help you. Because see, मैं आपको help करने की कोशिश करता हूँ. जैसे आप बोले ना, आप street dancer हो. Majority of you, मैं honestly बोल रहा हूँ आप लोग को. You are not spending time on the stuff. To win this competition, this is not an Indian competition. This is a global competition. मैं कल भी बहुत लोगों को बोला कि don't train like you're coming for to compete in India. Think of the bigger picture. Now to see the bigger picture, you have a bigger canvas. You have to know material. जैसे information knowledge बहुत important है. Like Adrian said, it's not only about physical thing like what I can do. It's how much I know and what I can do off that. So like try to first educate yourself, take your time, then compete. Or compete, lose and learn it the hard way. Either way, आप हारने वाले. So you find your option of कैसे हारने वाले. समझ में आ रहा है या फिर सर के ऊपर से जा रहा है? सर के ऊपर से? Nice. सामने से जो कहना चाह रहे हैं ये कहना चाह रहे हैं अपनी नॉलेज बढ़ाओ. दूरी में आप ये बताओ अगर आप कोई स्टाइल करते हो, ठीक है, आप उस स्टाइल कर रहे हो तो तुम उस स्टाइल के फाइनल मतलब जिन्होंने उस स्टाइल में अपना नाम बना रखा है उस स्टाइल के लोगों को तो जानो दो ना, उन इंसानों के नाम तो आप जानो. तो दैट मतलब ये चीज़ को बताना चाह रहे हैं अपनी नॉलेज को बढ़ाओ. ठीक है, नॉलेज को बढ़ाओ. हर नॉलेज म्यूजिक की नॉलेज जिस टाइम को आप कर रहे हो, मैंने बोला था ना थ्योरी डांसर से डांस करते करते बट थ्योरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. समझ रहे हो आप? तो वो नॉलेज को आप बढ़ाओ. दैट्स व्हाट इज ट्राइंग टू डू. दिस इज ट्राइंग टू हेल्प, मतलब आपकी हेल्प ही करना चाहिए. Any other questions? किसी को कुछ पूछना है? किसी को यार सारे तो डांसर हैं, हम भी डांसर हैं, तुम भी डांसर हो, क्यों ना यार? हेलो सर, हेलो मैम. एक्चुअली हम लोग अभी छोटे हैं एंड अभी हम लोग आगे गए तो हम लोग को बीट करना होगा बड़े लोगों को. तो हम लोग ऐसे इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? और बहुत सारी कंपटीशन में हम लोग ने देखा है कि छोटे और बड़े ग्रुप को साथ में रखते हैं, सीनियर्स जूनियर्स. तो उनमें हम लोग को बीट कैसे कर सकते हैं? लूज करके, टाइट करके, कैसे? Do you understand English as well? Yeah? Okay, they will translate it. So I can let you know, guys, that in the past 3 days, I saw kids dancing better like adults. It's not about ages, it's not about your size, it's not about how old are you, because of course you have a basic talent, but so it's you have a talent, you start your journey with your talent, right? And after all the years, all the knowledge, all the experience, what you will build you will give you more and more, right? And will build you. But I can tell you that you can be, how old are you? 11. 11, okay. So I can tell you like you right now 11 and maybe, I don't know because honestly I don't remember exactly which group, and so it's a group competition. I cannot just pick you right now because it's not a solo competition, but maybe right now you are 11 but you are a better dancer like others who are adults. So it's not about ages, it's
Yes, it's not about ages. So it's maybe there is a crew who's got just 7 years old dancers. Believe me, at the World Championship, I saw like 6, 7 years old Japanese kids, and they were killing the stage. And there were adults who were just standing next to them, and they said that all the respect. Believe me. So just believe in yourself. Just believe in yourself. And never ever comparing yourself to another one. Comparing yourself to yourself. Okay, anyone want to ask question? The last question of night. Last two question. Okay. Last का दो सवाल. इसको पूछना है. Anyone want to last two questions? कोई भी. अरे discussion नहीं सर. You want questions? Discussion नहीं. Okay. 5, 4, 3, 2. Okay, hold on. This, okay. हेलो सर नेशनल लेवल तक जाने के लिए दुबई पास करनी जरूरी है सिर्फ डांस थैंक यू This is a dance competition, and it's not just for her, but for everyone, guys. That we saw in the past few days crews who's got a lot of tricks. And I'm not speaking about people in good levels. I'm speaking about tricks like basket toss, like flips, like some acrobatic thing or cheerleading. And yeah, we appreciate and we are yeah, it's additional if a crew have a signature move. But signature move is not a trick. It's something what is identify your crew and it's get a higher score if most of the members of the crew involved. But this is a dance competition. So what we would like to see, just actually see pure dancing and including the one thing, the transitions, because for me it's really important. Sambo, can you show the best transitions on the stage? Woo! Yeah, that's reason. So you have just one thing. You have formations in your routine, right? We were speaking about V and diagonal and lines and everything. So when you change the formations, dance, not run, not walk. I can see still you on the stage. So just because you are walking on the stage, that's a lot of time, but you can spend it dancing, right? So why do you waste this time? Just dance, please, just dance. Be clever, be smart. I'm not mad, sorry, I'm just so passionate. As well. Sit. I know I can see you. Okay. See, since you asked this question, when you do stunts and tricks, it does not carry extra marks in the criteria. But maybe if the crowd cheer you really good, then you might get a mark in entertainment value. But when you do a stunt, if you fumble,
if you don't get to the next step, that's a deduction, right? So there is also a negative side of it. And if you still believe you can win only when you have stunts, that's not true. There are so many crews in the world who do not even have a single stunt, but still win a competition. You want an example in India? Go check my crew. It's called BFAB. Yeah, so well, that was flex, by the way. In street we call it flex. What Ravi Anna just said. Anyway, but yes, your question was very good, and what Adrian ma'am just said regarding the transition. A lot of the crews, even the ones who came first in adult division, in all divisions, second, third, you all think that we can't see when you do this and you run around stage. It's so obvious and it looks terrible. Instead, like dance into from A to B. Like instead of like walking into a formation, dance into the formation and go. Does that make sense? Because now what happens, you don't realize 2 minutes is really tight. A lot of crews, you realize if you are a smart dancer, you will realize if you watch the a lot of crews instantly start the moment the cue is given. They start with an impact. Like boom, boom, they're at it. They're not wasting a single moment, a second. Even when they're moving. And some crews take their time like 1, then 2. Then people are running in like this. I don't know if this is a ninja move or something like we dancers created by mistake that we realize that, oh, that person disappeared. We cannot see them anymore. Oh, he's there. You get what I'm saying? It just looks bad. Because like you're wasting that precious 3 seconds, which can be a moment. So, like behalf of the jury, dance more. You can flip, you can jump, you can fly. Great, good for you. But this is a dance competition. It's not acrobats or like Zumba or like I don't know what it is. And also one more thing, people confuse breaking as stunts. Do not forget, breaking is hip-hop, it's the first style. So breaking is not stunt, breaking is style. Does that make sense? So, advice to everyone, use your transitions well. Don't be ninjas. Alright? But good question, you had a great question. I think that was like a finale question. Oh, bless you. You can go. Thank you. आवाज तो दो. Are you ready? लाइव ऑन रहने दो साइबर होगा ना शेयर करना ही है जजेस इंटरैक्टिव सेशन इधर आओ करना है शेयर मैं बोल रहा हूँ ना करना है अभी कुछ तो है सेशन साइफर है थोड़ा सा Okay, hold up. We are doing some ciphers. Everyone, we got the rappers from my city, from my hood, for you all. More of it, question answer. So I got my whole rappers. Okay, keep it up. Why? Boom, shut up. Kara music, make. Come on. लाइट्स नहीं है Okay, we're doing some cypher for you. If you want to move yourself, you can. Your DJ Max on the beat. Would you like to do hip-hop cypher? Would you like to do hip-hop cypher? मैं बहुत इंग्लिश बोलता हूँ। तो तुम्हें का cypher करना है कि नहीं? You want to do cypher? It's very open for you. मैं कुर्सी नीचे करवा देता हूँ। तुम लोग वो बना सकते हो। Come up. आगे. Come forward. जिनको ये चीज पसंद है वो पहले आएंगे बाहर ये लोग कम है come on
अरे आगे आ जाओ, ये झारखंड है ना। देखो अभी तक उनको गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्यों। ए comfort, please you back to the beat. वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। करो ना सर, तुम भी कर सकते हो। Yes. Why you claim that you rich, that's a false claim. I'll be straight to the whip, no baggage claim. Whole lot of styles, can't even pronounce the name. You ain't got no style, see you on my Instagram. I be rocking it like it's fresh out the pan. Only when I'm taking pics, I'm a middleman. Walk talking like a boss, I just lift a hand. 3 million cash, call me Rain Man. Money like a shot, that's my rain days. And we all in black, like it's gangland. Say the wrong words, you me stick to your bitch like a straight tan. Mr. What kind of boy in the city know my name, nigga. I ain't gonna say check. Keep it taste. Hey. I'm rapping in Pinocchio's nose, cause I'm a supercalifragilistic-tic-tac-pro. I gave my oops, daisy. Now you got the crazy. Crazy with the books, googly go, where's the baby? So 1, 2, buckle my Zo. yabba do, hibbity who, crack दीक्षा भी ना सुनो Bitch, bitches that love the boost. I'm just here to find the truth. The kilograms is the proof. I got Kings, Dr. Seuss. We sit and smoke the flutes. If I never said good for you, then you're 95% of me. आपको नहीं, अरे चलेगा, आपको सब अलाउड है मैम, आपको कल नहीं बोला था, आप लेकिन अभी भी आ रहे हो, आप लेकिन अभी भी आ रहे हो, आप आ रहे हो, बस the dope game destroyed my youth. Now Kim Jones, they all my suits. The money is the evil root. Let the smoker shine the coats. Rich bitches that love the boost. I'm just here to find the truth. एक नंबर मस्त हमारा मस्त अरे अर्षद ट्राइपॉड ही मारेगा साइड कैसे लोगे आपको लेना है लो ना आपको जो करना है आपको जो करना है करो आप
जाओ ना, नाचो ना। क्यों? नाचो ना। जाओ ना। जाओ ना, जाओ। कौन सा वाला? ये वाला? ब्लैक वाला? आगे लेके जाओगे? A few blocks from the Inglewood Cemetery. I looked through all times and nights in my memory. Then I learned to कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। dictionary. I still walk till I get so marky. Even though I used to walk them red carpets. My family lived in my grandpa's garage. So I started working just to help out my guys. It all started when my grandpa crossed over. Now one day I'ma be a crossover. Right now it's just who is that girl? But one day I'ma be all around the world. Still get grounded, always stay grounded. Still do chores even when I'm on tour. But this for show, I'ma always be me. That west side, back you G. Stop till I get to the top. I'm so Ricky from the block. Always had a little, but I wanna die. No matter where I go, I know where I came from. I won't stop till I get to the top. I'm so Ricky from the block. Always had a little, but I wanna die. No matter where I go, I know where I came from. Let's go. Yo, what you? Woo! Okay. तो मैं हमेशा और नहीं रहता बहुत पसंद है चांद दाग चांद पे लगा हुआ दाग जो जो Let's go. पूरा फिल्म बना रहे हो क्या? Let's go. Let's go Diksha! Let's go Diksha! Give me a
Yo. Okay. Very nice. Okay. Okay. ये तो शेयर भी नहीं करा लिया होगा ये लाइट ब्लॉक मत करो लाइट ब्लॉक मत करो Okay. लाइट ब्लॉक करना हाँ. लाइट ब्लॉक करो जाओ ना Okay. Last round. Come to me, come to me, come to me. Oh, this sexy energy, I love it. Maybe you love it, maybe you love it. Master. yo Okay, so it's for you, not for everyone. सबके लिए बस तुम लोग के लिए हो परफॉर्म किया. You know the rap. क्या पसंद है? मैंने करा है. आज मेरे पास मेरे आर्टिस्ट है. डेंजरस है, इंडिया के बेस्ट रैपर्स है. मैं मानता हूँ. I don't know about the people, but I black it. Come on the floor, bro. Let's go. घूम जाएगा. मचा दे ब्रो Let's go. Yo. Let's go. Yeah, man. मचा दे Okay. मैं सिर्फ अरे इसका बीट है भाई, इसका बीट भी है. इसका बीट है. Play that shit, man. Okay, let's go. जाओ ना चाय लेकर आओ ना This is the black ink on the way from my own. Play the beat. शाबाश. ए चना. करना. तो चलो है ना. मैं बता रहा हूँ. Yo, shit. अरे आओ. Let's go. अरे आएगा ना. पूरा हो जाएगा. बस yo. If you love it, just enjoy. If you don't love it, just. पैसे मारते बचा Maybe you love it. Very good rapper. Student is. यो सबसे बड़ा रोग है कि रोज पीठ पीछे बातें करते हैं बोलते हैं तो स्कूल में रहते हैं रोज बातें एक की कटोर बातें एक की है मस्ती की शेर से वाले बातें ये किशोर अपनी इसकी कुछ छोटी सी है सोच कर करते हैं बहुत रोती है बात होती है बहुत होती है नसीब लेगी ये पीठ पे मैं तुझे बात से आम पड़ गई है छोटी भी उठा रोज मेरा दोस्त मेरा शौक मेरा तो तू मेरा पूरा ये रोक टोक से ये रोज सोचते मैं शब्दों के बोल मेरे बोल के लिख दूं मैं सोच मान पर छुड़ मेरे शब्दों से नफ्सों से काट बरसों के बाद रैप के से कोई मैदान में सांड पेटा शैतान ये ना पहलवान तू पूरा मेरे रेडर के बाहर पहला पड़ा देने में तेरा जवाब फेला तू खा लिरिकली किल किया बीट को 0 मेरा बीट को रैप के जनरेशन क्या कम ऑन आने दे वर्ड्स को रिपीट को रोक आने वाला वर्ड This is a freestyle, you know. I know this. Do you have nothing up high? Who's next? Okay, you know what it is. This is going like maybe. Okay. This is going to be.
हे माझा फोन कुठं Why not? Go on.